Like, what is an essential condition? Think about it. You may not have the answer right now, but you know the answer. You may not be able to say it, but you know. What is the essential condition in order for any object to have color? Pigment. What? Yeah. Pigment. Bio वाला pigment. जी सर. Bio वाला pigment. Or anything else? I think color is the property of the object or the observer. Color, it depends on the object or the observer mainly. Object. Object. See, color, like when we say color, na, so color is it completely depends on the observer, right? And we feel very weird when I say this, very unscientific, but it completely depends on the observer because, for example, in the essential condition for color to be seen is light. If you turn off all the lights, there will be no color. नहीं sir, but ये जो आपने लिखा है red color से, even if I turn the lights off, then also I will see this in red color. That is true because it is emitting that red light. This emitting red light, that is not a color. Color किसी चीज का होता है ना, तो मतलब it's not when we talk about color, then we don't talk about what do we say, anything which has any luminous object. We don't talk about luminous object which has its own light. Color, it is generally said for things they're not luminous, but they have certain color. But if you turn the lights off, you will not see any color, right? Also, light is an essential condition. This may have happened to you or anyone you know that they went to a shop to buy some clothes. The clothes, it looked different in the shop and it is looking different in the home. The reason? Light. Makes sense? Yes or no, please tell me. Depending on what type of seed, because since childhood we have been looking at only white light, so we are observing things in whatever color we are seeing. But if suddenly we don't have white light and we have, let's suppose, yellow light or some different type of light in our earth, then our complete perception is going to change regarding color. बात समझ में आ रही है आप लोग को? आया ना पता है अन्नपूर्णा सर जी का हर्षा एरिया. That light is an Yes, essential sir. condition, है ना? And it is not a, we cannot say that it is property of a particular object. It is also a property of like what type of light you are, what type of light is hitting the particular object, and then whatever it is, whatever we are seeing. So if I categorize that when light hits an object, so सबसे पहली बात तो color, we are going to talk about colors only in the sense when light hits the object. If there is a color of a luminous object, then we don't say that that is a colored compound. We say that is a luminous compound. ठीक है? Luminous compound, luminous object. Right? So we are not going to categorize them essentially on the basis of color. We are going to say that this is luminous. It has its own light. Right? But if there is something which does not have its own light, but it has certain color, you say that this is the color of this thing. ठीक है ना? So we don't write this when light hits object. Whenever light is hitting an object, then light, it strikes on atoms, right? And atoms, they have electrons, right? So let's suppose what happens, all the light, like whatever light you are giving, all the light is absorbed by that particular object. That means whatever frequency of light we are giving to it, like Vibgyor, the complete Vibgyor frequency we are giving to it, and all the Vibgyor is absorbed by that particular object. So when everything is absorbed by that object and there is nothing which is reflected back, then we see that object as black in color. When each and everything is absorbed by that particular substance, that object, and nothing is reflected, ठीक है? तो एक केस क्या होगा? Absorbs all light. The object absorbs all light. The complete Vibgyor is observed, right? Therefore, object will be seen as black. Object appears black.
Another is if nothing is absorbed. Nothing is absorbed. Like no light is absorbed, then what's happening? All the light is reflected. And acha, it absorbs all light. That is nothing is reflected. ना इसका क्या मतलब हुआ? Nothing is reflected. Okay, so when light hits object, then I am talking about white light. So nothing is absorbed, therefore, and white light is reflected. Therefore, object appears black. And the other condition will be some wavelength of light. Like in white light, we have Vibgeo, right? So they have certain wavelength, different wavelengths. Certain wavelength of light is absorbed, and rest is reflected. Then object appears colorful. Okay, for example, we have Vibgeo. So let us suppose blue and orange is absorbed by the object, violet, indigo, green, yellow, red, it is reflected. So whatever the combination of violet, indigo, green, yellow, and red will be, that will appear as the color of the object. Because blue and orange is absorbed, how it will be absorbed? There will be conditions. For example, coordination compound में कैसे absorption of light होता है, उसी को बताते हैं CFT के through. ठीक है? But in general, you can start, like if you have atoms, there will be certain energy levels. So when the electron is then you get light, then if the light corresponds to the difference in energy of the first shell and the second shell, then the electron will jump to the second shell and it is going to absorb this light. So ये light absorb हो गया, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, reflect हो जाएंगे. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Why we see color of anything? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. So like you complete up पूरी दुनिया आपने हमेशा transitions of electron always happening. I'm not saying from one shell to another, but that are always happening from certain level of energy to higher level of energy, and those absorption of light is given to give you color in this complete light. If you don't have this concept, then you cannot explain the color. Now, what happens in coordination compounds? Now, hopefully, you are not writing this. If you are writing, then please stop. What happens when we have coordination compounds? So, according to CFT, if I talk about anything which is ML6, then in that case, we'll have something like this. This is the EG level, and this is the T2G level, right? So, and let's suppose there is one electron. The difference between these two is what? Del O. Okay. Now, if a light strikes, okay, मान लेते हैं विबज्योर, white light, विबज्योर, ठीक है, विबज्योर यहाँ पे strike किया. Now, one of these, विबज्योर is to have many different color of light, ना, violet के all shades, indigo के all shades, all the shades of blue, all the shades of yellow, orange, and red will be there. One particular wavelength is corresponded to the energy equal to del O. Let's suppose, and that was certain yellow. Okay, that was certain yellow wavelength. So what will happen? That particular wavelength which corresponded to the energy difference between EG and T2G level, that will be absorbed by the electron, and the electron will transfer to the EG level. Now, it absorbed the yellow type of color. What it transmits or what it reflects is violet, indigo, green, orange, and red. So this particular combination of color is going to appear as the color of the object. Make sense? Yes or no, please, guys? बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतना ही समझना था आपको. क्या लिखना है वो हम लिखते हैं यहाँ पे. प्लीज राइट दिस विथ मी. The color we see in a complex or of a complex.
is due to the light, it's due to the light absorbed by the complex, and reflected light is seen by us as the color of complex. Okay? This is how we see color of complex. Why this happens? The d orbital electron absorbs energy and transition to higher energy level from T2G to EG, EG. This is called DD transition. It's called DD transition. Okay? The frequency of light absorbed depends on the CFSE. How can I write del symbol? Del U of complex. ठीक है? Simple. Raise your hand once for that. Just waiting for area. इसको मत बनाइएगा. हम समझाएंगे थोड़ा सा आप लोगों को बस.
No need to make this table also. If you are done, how the electrochemical series was made. ठीक है ना देखिए. When you सबसे पहले ये समझ लीजिए आप violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. This is in decreasing order of hierarchy, meaning decreasing. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. So if violet color is absorbed, ध्यान सुनिएगा. If violet color is absorbed, that means we are having एक आपके पास कॉम्प्लेक्स है which absorbs violet color and there is one complex which absorbs red color, right? तो किसका डेलो ज्यादा होगा बताइए, वायलेट का या फिर रेड वाले का? whose डेलो will be larger? Tell me guys. There is a complex which absorbs violet color. There is another complex which absorbs red color. So whose डेलो will be higher? Tell me. Violet or red? Which complex? जल्दी बताओ यार. Violet one, because violet one is having higher energy, right? So from this, by the way, how do we know, sir, which color is absorbed? So this is a color wheel. So for example, if this is the color that appears, it's the color of the object. If you see something violet, that means it has absorbed yellow light. If you see something green, it has. If you see something yellow, it has absorbed red light. Make sense? Jasola, please tell me. Yes. जल्दी बोलो. Sir, can you repeat? Yes, sir. Right, because red is cancer. Okay, I'm saying that if a complex is having violet color, that means it absorbs the yellow color. ठीक है, because all of them are cancelling each other. Your जो होता है violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. But if you mix it up, it appears to be what? It appears to be white. Why? Because violet it is cancelled by this yellow, orange, red type of thing. Then red is cancelled by green, is cancelled by orange. Right? Okay. So if you are going to rotate this whole thing, it's going to be what? अब ठीक है ना, रेड को तो कैंसिल करने के लिए ग्रीन है, सिमिलरली ब्लू को कैंसिल करने के लिए ऑरेंज भी है, but there is nothing to cancel the effect of yellow. That is why when white it appears to be the color, then white, तो उसका उल्टा ये होता है, ठीक है ना, कलर हुआ. अगर व्हाइट तो येलो एब्जॉर्ब हुआ. If you are seeing that complex as blue, that means orange. If you think that as green, red is absorbed. If you see that as red, green is absorbed. If you see that as green, red is absorbed. Violet तो फिर yellow absorbed. ठीक है, make sense? समझ में आया सबको? आया ना? दूसरा आ गया होगा, तो हार्ड नहीं. Yes, Make sir. sense है? सुनो आया. ठीक है. Yes, That sir. means violet is absorbed. तो आपको क्या दिखेगा? येलो दिखेगा. अगर येलो दिखा है, देख फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, you are having NH5, NH3. अब यहाँ पे हम लोग क्या कंपेयर करें, whether chlorine is stronger or H2O is stronger. So in chlorine, we see that as violet. That means yellow is absorbed. है ना? Now similarly, when you add water, you see that as red. रेड अगर है तो फिर ब्लू ग्रीन टाइप का कुछ, यानी कि रेड एक पर्टिकुलर शेड ऑफ रेड होगा. दैट इज व्हाई दे आर राइटिंग ब्लू ग्रीन. So which is having higher energy? Blue green is higher energy, yellow is having higher energy. किसका ज्यादा एनर्जी है बताओ? ब्लू ग्रीन का ज्यादा है या फिर येलो का ज्यादा है? Is my voice clear? Am I audible, guys? हर्षा, अन्ना, सिद्दीका. So your voice is मरियम breaking. आप नहीं ठीक आप. I'm asking what others. Harsha, am I audible properly? It's breaking. अच्छा अच्छा great. आपने तो कहा था ये मरियम, लेकिन just confirming with other students. How about now? Is it any better?
No, Yes, it's sir. not better. I think. Is it better? Yes, sir. It's better. अच्छा ठीक है. चलिए, I'm asking now. Which is going to be having like higher yellow? A complex which is absorbing yellow or the complex which is absorbing blue green? कौन ज्यादा higher energy का होगा? Blue green. Blue green. Blue green वाला है ना? That is why I will say, see, in the first and second complex, cobalt is same, so there is no effect of cobalt. Like cobalt is not going to show. I mean, because of cobalt there will be no change because cobalt is दोनों में. Similarly, we have 5NH3 and here also 5 ammonia. So 5 ammonia is also not going to change anything. What is different here? We are having chlorine and water. And we know that water is stronger ligand as compared to chlorine. अब वही देखिए, we have cobalt NH3 whole 6. So we are seeing yellow orange. When I see yellow orange, it will be what? Approximately blue. Okay? What you are seeing? You are seeing blue. Now, when you have CN, when you have CN, then you are seeing very pale yellow. What? Very pale yellow. That means you are at the end of the spectrum. That means the absorbed color, what? Absorbed color was ultraviolet. It was ultraviolet. That means you were violet से पहले वाला. समझ रहे? Pale yellow समझ रहे? If it is pale yellow, that means even before violet there was something. That is what is being absorbed. If that is being absorbed, then obviously ultraviolet is what? It is having higher energy. If you don't know cosmic gamma X UV, visible IM are UV, and then we have UV, and then we have visible, then we have infra, then we have micro, then we have radio, right? So from here we can say that ammonia is a weaker ligand in comparison to CN. CN और ammonia में कौन ज्यादा होगा? अब देखिए, another thing, ये तो समझ में आ गया होगा hopefully. CN is what? It is stronger ligand and it is stronger in the spectrochemical series also. That is why it is known as spectrochemical series. Spectro means color, है ना? Now, similarly, now what is the effect of these things? Like we are not changing. Like for example, see copper H2 whole 4. This is what? This is tetrahedral. There is only 4 ligand. There is only 4 ligand. Now you are seeing that color as what? Blue. So it is absorbing what? It is absorbing red. And we know that delta T is what? It is very small in comparison to delta O. When you have 6 water molecules, then it is going to be violet and it is blue green. So obviously this is what having higher frequency or higher energy. Okay, so this is how the complete spectrochemical series was made. ठीक है? ये तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको हम तो समझा देते हैं आपको, लेकिन आपको क्या लिखने की जरूरत है यहाँ पे? ठीक. In strong field ligand, del O is higher. Therefore, light of higher energy, higher frequency, and lower lambda is absorbed. Similarly, in weak field ligand, we know that del O is smaller. Therefore, light of lower energy, lower frequency, and higher lambda is absorbed. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. That means we can say that lambda, ये सारी चीजें लिख लेते हैं. Energy and frequency की जब बात होगी, that means it will be directly proportional to del O. And if I talk about lambda, then it will be inversely proportional to the del O. Lambda of what? Lambda of the light absorbed, है ना? Light absorbed. Please write the question. Compare the wavelength of. Compare the lambda of light absorbed by A. Nickel H2O whole 6, 2 positive. B. Nickel NH3 whole 6, 2 positive. C.
निकल NO2 होल से 4 नेगेटिव। ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट द कुछ चीजें आप देख लीजिएगा पहले। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कंपेयर बिटवीन ए बी एंड सी ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज हियर आल्सो +2, हियर आल्सो इट इज +2, एंड इफ यू सी हियर आल्सो इट इज गोइंग टू बी +2, है ना। NO2 का कितना होता है? NO2 इज गोइंग टू बी -6। यहाँ पे 4 माइनस कैसे आया? बिकॉज निकल विल बी हैविंग +2, इफ यू ऐड both of these you will get overall -4। Right? So all of these things are same, you don't have to compare that। तो इसको लिखिए रहने दीजिए। ठीक है। नाउ निकल 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 एवरीथिंग इज सेम, व्हाट इज गोइंग टू चेंज? द ligand। So you have to compare the del O first of all। They are asking about lambda, but they want to know whether you know the difference in del O or not। If you compare this, then A will be having the smallest del O, followed by B, and then followed by C। Okay, it's followed by C। Now, if I want to compare lambda, then lambda and del O are inversely related, so the same sequence and reverse sign, same sequence A, B, and C, but the sign is going to change। So this will be the comparison of lambda of the light absorbed। Sir, how do we know which has higher LO? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पढ़े हैं क्या? Okay, sir. लुक एट द लिगेंड्स एंड यू विल नो, है ना। लिगेंड्स देख के पता चलता है। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो चुका है, बट आइसोमर्स इज रिमेनिंग। आइसोमर्स थोड़ा सा पढ़ाना बाकी। आइसोमर्स में वी हैव टू सेगमेंट्स, वी हैव टू टेक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड वी हैव टू टेक स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर इज नॉट गोइंग टू टेक एनी टाइम, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स, इफ यू लुक एट एनसीईआरटी, तो फिर उसमें आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आई विल मेक एन एफर्ट गिव यू आइडिया अबाउट स्टीरियो आइसोमरिज्म, and then we are going to jump into NCERT। उसका NCERT में पूछ जाएंगे, and then we are going to look at it, right? But starting me, I'm going to give you an overall idea about stereoisomerism, how it happens, and how you have to think about stereoisomers, and then we are going to look at NCERT examples and NCERT questions, because NCERT questions and examples, they are like ये होता है, this is France, this is fact, this is must। ठीक है। So before going into that, I will give you a brief idea on how to think about stereoisomers, and then we can go on to NCERT। Please raise your hand if you're done। Just waiting for Sadika। देख, write the heading isomers। ठीक है, please write this with me। Compounds with same molecular formula but different chemical and physical properties, इनको कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स आर कैटेगराइज्ड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज।
One is structural isomer. One is stereoisomer. Now, structural isomer क्या होता है? They differ in the networking of atoms. बॉन्ड में ही दिक्कत, मतलब बॉन्ड में ही चेंजेस रहता है. Here it is bonded to chlorine, वहां पे किसी और चीज बॉन्ड है, राइट? They differ. एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है उसमें आपको नाम से पता चल रहा है, they will differ in structure, same molecular formula but different structure, differ in structure और नेटवर्किंग ऑफ एटम्स, कौन किससे बॉन्डेड है उसी में फर्क है. विथ व्हाट एटम इज बॉन्डेड टू व्हाट एटम, देयर ओनली आर हैविंग डिफरेंट, इवन दो द एटम्स आर सेम. फॉर एग्जांपल आपको हम अगर बोले HOO और बोले हम HOH, even though both of the molecules they are HHO, है ना, both of the molecule are going to have same molecular formula but the connectivity is different, right? Even though the previous one was just a hypothetical one, but वही connectivity में difference होगा, networking of atoms. Okay. Now, what are the structural isomers that we are going to study? We are going to first of all study ionization isomer. Second, we are going to study hydrate isomer. Third, we are going to study coordination isomer. Fourth, we are going to study linkage isomer. देखिए, आपको हमेशा लगेगा ना सारे के सारे आयोनाइजेशन आइसोमर ही हैं. दैट इज ट्रू. ऑल ऑफ दिस हाइड्रेट आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, ये सारे के सारे आयोनाइजेशन आइसोमर ही हैं, बट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस, राइट? इस वजह से इफ इट इज इफ इट इज नॉट लिंकेज देन इट इज आयोनाइजेशन. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तब वो आयोनाइजेशन आइसोमर, जब वो हाइड्रेट नहीं है तब वो आयोनाइजेशन आइसोमर है ना. आई विल शो इट आल्सो. Stereoisomer, what are stereoisomers? They differ in networking, same होगा. The arrangement of atoms in space will be different. Differ in the arrangement of atoms in space. Two times geometrical isomers, and there one is optical isomers. Copy this down. Waiting for Anna, Siddika, and Harsha. Just waiting for Yahya. सबसे पहला हेडिंग डालिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. Number one.
ionization isomer gives different ions in solution. ये तो डेफिनेशन हो गया इसका, ठीक है। ये क्या हो गया? Like, what is the definition? Ionization isomer are those which give different ion in the solution. How are you going to identify it? ठीक है। So what will happen? It will contain anionic ligand and anionic counter ion. Contains anionic ligand and anionic counter ion. Anionic ligand and anionic counter ion, these type of coordination compounds are going to show ionization isomer. For example, देखिए जरा, we have cobalt NH3 whole 5, chlorine and SO4. Now, it has an anionic ligand, that is chlorine, and the counter ion is also anionic. That means this can show coordination isomer. How? The coordinate isomer, or sorry, my bad. The ionization isomer of this particular coordination compound will look like this: cobalt NH3 whole 5. SO4 is now acting as the ligand, and Cl will be acting as a counter ion. So these two are what? Ionization isomer. Because if you are going to throw this into solution, you are going to get cobalt NH3 whole 5, Cl 2 positive, and SO4 2 negative. SO4 2 negative. If you are going to throw this in the solution or aqueous solution, then you'll get cobalt ammonia NH3 whole 5, SO4. You'll get here 1 negative, sorry, 1 positive, and you will get Cl 1 negative. Both of these are odd. Both of these are going to give you different ions. अब ध्यान सुनिए जरा, how are we going to distinguish them? Don't write now. ठीक है, this complex है ना, हम इसमें SO4 2 negative है, ठीक है, so we use two different things, AgNO3 and BaCl2. If you are going to use AgNO3 here, then no reaction or no white precipitation, no white PPT. But if you are going to use BaSO4 in this particular complex, BaSO4 नहीं use करना, BaCl2 my. If you are going to use BaCl2, then it will react with the SO4 2 negative, that is the anionic part, and it will give you BaSO4 का white PPT. BaSO4 white PPT. Now, if you are going to add here AgNO3, then it is going to give you AgCl, which is white PPT. But if you are going to use here BaCl2, then it is not going to give you anything, no white PPT, or nothing actually, I mean, there is no reaction. So this is how we can distinguish them. ठीक है, सारी चीजें हमने बता दी है, एग्जांपल भी दे दिया. This example is important because it can come as an question also. How are you going to distinguish between this complex and this complex? तो आप कुछ भी बोल दीजिएगा, this will not give any white PPT with AgNO3, but this will give white PPT with AgNO3. Or you can say this first molecule is going to give white PPT with BaCl2, but the second compound is not going to give you any white PPT with BaCl2. Copy this down. Let me know when you're done. Please let me know if you have doubts. Waiting for Harsha and Yahya.
Next, second is hydrate isomer or solvate isomer. They differ in presence of H2O as molecule or H2O as ligand or merely as water of crystallization. Water of crystallization. ठीक है, तो इसको this is तो definition है ना. Water hydrate isomer, so hydrate isomer are those isomer which differ in the presence of water as ligand or merely as water of crystallization. पहचानने का तरीका क्या है? In this case, you will either have H2O in or you will have out. कहीं पे भी आपको अगर वाटर मिल गया ना, इन मिल अंदर मिले चाहे बाहर मिले, in and out, तो आपके पास that will give you a hydrate isomer. For example, if you have something like this, chromium H2O whole 6 and Cl3. Water is inside, that means this particular molecule it can show hydrate isomer. कैसे शो करेगा सर? ऐसे शो करेगा, देखिए, chromium H2O whole 5, एक Cl अंदर और एक पानी बाहर, तो एक Cl अंदर तो Cl2 बचा डॉट 1H2O. दिस कैन अगेन शो Cr H2O whole 4 Cl2 और एक Cl बचा डॉट 2H2O. वन मोर Cr H2O whole 3 Cl3, Cl एक भी नहीं बचेगा यहाँ पे तो फिर ठीक है, तो ये वाला कंडीशन नहीं हो पाएगा. दिस विल नॉट बी बैलेंस ना, ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा फिर. फाइन. हाउ आर वी गोइंग टू डिस्टिंग्विश देम? डिस्टिंग्विश करने के लिए आप इसमें डालिए AgNO3, 3 counter ions of chloride ion, so you will get 3 moles of AgCl. In this you will get 2 moles of AgCl. In this you will get only 1 mole of AgCl. है ना? Plus you can say there will be 0 H2O. Plus you will get 1 molecule of H2O. In this you will get 2 molecules of H2O. So this is how you can distinguish. Copy this down, raise your hand once you're done. Which of the following will show hydrate isomer? H2O in और out हो रहा है तो देख लीजिए, बस वो hydrate isomer हो जाएगा. Everyone done? Just waiting for Harsha. Right, the third one. Coordination isomer. Coordination isomer में differs in distribution of ligands. Differs in distribution of ligands. ठीक है, पहचानने का तरीका occurs only when
coordination compound has anionic and cationic complex ion. तभी होगा. Okay, when anionic and cationic both the parts are what are complex ion. For example, देखिए डेफिनेशन वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है आपको पहचानना, ठीक है ना. दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग एन एफर्ट टू टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स. Cobalt NH3 whole 6, this will be the cationic part, and let's suppose we are having chromium CN whole 6. So right now cobalt is bonded with ammonia, now right now chromium is bonded to CN. Now this particular type of complexes, they can show coordination isomer. How? Chromium ammonia से bond कर जाए and cobalt is now bonded with CN. ठीक है. Write the fourth one. This is example. Okay, this is example. Both of these are what? Coordination isomer. The fourth one, linkage isomer. जैसे देख रहे हैं, if you are going to put them into solution, they are going to give you different ions because ions अलग है. Similarly, if you are going to put these three into what? These three into solution, then obviously they are also going to give you what? Different ions. सारे हैं ionization isomer, उसी में classification. I mean, but there is no textbook writing it like that. ये हम कह रहे because that's just an observation. कि ऑब्जर्वेशन से जब हम 12th में थे हमको ये दिक्कत थी. हम सर से बोलते सर सारे तो आयनाइजेशन है, दिस इज आयनाइजेशन. चलो ठीक है सर. if I am going to put this into the solution and if I am going to put this first one and second one, then I will be getting different ions only. हमको सेम आयन थोड़ा मिलेगा. the first case I will get chromium and 6 hexa aqua complex as a ion, and in this case I am going to get penta aqua and one chlorido. So obviously the ions are going to be different. ठीक है. तो हाउ आर यू गोइंग टू डिस्टिंग्विश वेदर इट इज हाइड्रेट और नॉट. तो पानी अंदर या बाहर हो रहा है तो फिर वो हाइड्रेट है. बट इफ यू हैव anionic ligand and anionic counter ion, then it is going to be ionization isomer. Coordination है, then anionic and cationic complexes both should be coordination compounds or both should be the complex ions. Last one is linkage isomer. Linkage isomer is easiest of all of these things if you are able to remember something. क्या remember? Differs in, अब ये definition कुछ नहीं पता चलेगा आपको. Differs in point of attachment of ligand. Point of attachment of ligand to central metal atom. Central metal atom. This occurs only when ambidentate ligand is present in a complex. If you remember ambidentate ligand, then if there is an ambidentate ligand, then that complex is going to show you what? Linkage action. कैसे? For example, if you have NO2 ना, NO2 में जो point of linkage है वो क्या है? Nitrogen is giving electron density to the metal atom. But if you have nitrito O, तो यहाँ ऑक्सीजन से होता है. सिमिलरली अगर CN है तो कार्बन से होता है, और वही अगर NC है then it is happening with the nitrogen atom. So see, point of attachment of the ligand and central metal atom is different. Similarly अगर आपके पास SCN से हो रहा है, it can happen with NCS, nitrogen is bonding NCS. So when these ligands are going to be present, तब वहां पे linkage isomer होगा. Copy this down, raise your hand once you're done.
After this, you write this question. Here, there are two complexes given, and they are one of these isomers. ठीक है, तो आपको बताना है कि पहला वाला कौन सा आइसोमरिज्म है, सेकंड वाला कौन सा है, थर्ड वाला कौन सा है. Guys, just take one more minute and send the answers. Send in the Zoom chat itself. You can separate them by comma. हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या किसी से? तो प्लीज लेट मी नो. किसी को समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है. सर मुझे पहले दो समझ और में है, बाकी के दो समझ उसके में बाद, नहीं है। अरे थर्ड एंड बाकी दो, फोर्थ मुझे लास्ट वाला तो समझ. ये फोर्थ में क्या हो गया? फोर्थ में क्या हुआ ये बताओ. ये हियर. आई थिंक सर, मालूम नहीं। थर्ड में बताओ. थर्ड में तो, थर्ड इज तो इजी है यार. जी सर। थर्ड वन इज तो इजी. अरे भाई, आप बस देखिएगा ना. कटायनिक एनायनिक दोनों, है ना. if both the complex ions, the cation and the anionic part are complex हैं, तो ये कौन सा होगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर.
Yes, ONO sir. NO2 linkage, अनायनिक काउंटर आयन अनायनिक लिगेंड, उसी का एक्सचेंज हो रहा है ना, आयोनाइजेशन. This is the cationic and the anionic part. Both of them are coordination complexes. Complexes require coordination. Coordination, linkage, ionization. हाँ. Fourth one is also coordination. See, in the first case, there is no platinum which is bonded to ammonia as well as chlorine. The second one, we have one platinum which is bonded to what? Four ammonia and three chlorine. यहाँ पे एक हमारे पास platinum which is bonded to only four chlorine. Here we have the platinum which was bonded to six chlorine. That's a coordination isomer. जब भी आपके पास इस तरह से आए, that is going to be coordination isomer. Sir, I didn't understand the fourth one. Why? I understood the rest. Want to see. Why did you don't? What, क्या कौन सा लग रहा है आपको, ये बताइए आप. It's the same TTC. But हम्म. I don't know. यू डोंट नो ऐसे करने से ना होगा. आपको क्या लग रहा है ये बताइए ना. व्हाट डू यू थिंक इट इज. Mm, ठीक है. पहले लुक एट द काउंटर आयन. लुक एट द काउंटर आयन. कैन काउंटर आयन एक्ट एज लिगेंड, ये बताइए. क्या जो काउंटर आयन है वो लिगेंड भी हो सकता है इन दीज केसेस? No. नो. तो आयोनाइजेशन आइसोमर तो नहीं है. मेक सेंस. Yes. इज देयर एनी वाटर? No. देन हाइड्रेट आइसोमर नहीं है. इज देयर एनी एम्बिडेंटेट लिगेंड? No. नो. Oh, बचा क्या? okay. Okay, that's how you do it. Okay. Even also you can see na, the positive part and the negative part both are coordination complexes, and this is the identification mark of what coordinate isomer occurs only when coordination compound has anionic and cationic complex ion. तो हमारे पास जो coordination compound है इसमें the cationic part as well as the anionic part both are what coordination complex ions. Then you are Oh, obviously going to get what it can show coordination isomer. Got this? yes. Okay, sir. Thank you. No problem. Annapurna, Siddika and Harsha, raise your hand if you're done. Right next stereoisomers. ठीक है. Number one, we are going to look at the stereoisomers that are possible when we have square planar complex. Square planar complex. ठीक है. Now, in square planar complex, ध्यान रखिएगा. Square planar complex has plane of symmetry
therefore it won't show optical isomerism कर लेते, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं शो करेगा। क्या आपको ये बात पता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कुछ भी पता है बताइए, नहीं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। इफ यू नो अबाउट इट समथिंग, स्कूल में पढ़ा हो या फिर कहीं और स्कूल में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। If you are not going to say anything, then हम क्या पढ़ाएंगे? Please tell me, is there anyone who has not heard of this term plane of symmetry? मरियम, ठीक Yes, है, sir. ठीक है, ठीक है। देर आर सर्टेन सिमेट्रीज जो आपको जाननी पड़ेगी। दैट इज वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, डोंट राइट एनीथिंग, ये कंसेप्ट इसको समझिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होगा ना, यू हैव टू कट कट दी कॉम्प्लेक्स, कट दी ऑब्जेक्ट, आप उसको काटिए, है ना, एंड ऑन दी आइदर साइड यू शुड गेट द सेम थिंग। ठीक है ना, कोई तो ऐसा कट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट लेटर ए, ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू कट इन दिस डायरेक्शन, then I am not going to get, like, I am on the top and the bottom should be same path, but I am not going to get that if I cut from whatever axis I have shown. Make sense? Yes, Right? sir. But it doesn't mean that A does not have any plane of symmetry. A can have plane of symmetry. It has. If I cut it like this, and on the right side and the left side, I'm going to get the same thing. Make sense? Yes, sir. Now, similarly, when we have a square, now that means it is a what? It is going to be having a plane of symmetry. And if there is plane of symmetry, एक और होता है center of symmetry. For example, if the another thing is center of symmetry. Right? Now, center of symmetry में what you need to do, for example, if you have, what do I say? आप ले लीजिए square, ठीक है, this is complete square. Square के आप right side जाइए, on the top side, what you will get? You will get a, this is what, vertex. If you go the same distance in the opposite direction, आप इधर गए थे ना, आप opposite direction जाइए, फिर से क्या मिला आपको? You got a vertex. If you go to the right side, you will get a edge. If you go to the opposite side, left side, you will get an edge. Okay, so that means this particular object, the square, it has a center of symmetry. So if plane of symmetry or center of symmetry is present in any of the, if in any of the object or compound or anything, then we say that it is not going to, it has been observed that those things, they don't show any optical isomerism. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो आप लोग हालोल के हालोरीन चैप्टर में पढ़िएगा। ठीक है, अभी मत पढ़िए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। जस्ट नो दैट कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आई होप उतना आप लोग कम से कम एडजस्ट कर लेंगे। that if plane of symmetry or center of symmetry is present in any of the complex, it is not going to show optical isomer, whether it is paraplanar or octahedral or tetrahedral, कुछ भी हो जाए, it is not going to show optical isomerism. Now, what about paraplanar? What about paraplanar complex? Why am I saying that it has a plane of symmetry? ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। So, paraplanar complex will be metal, metal. The ligands will be in square planar. That means ligands will be like this. These two are going to be inside and there will be two ligands outside. Okay. Now, all of this is in what? It is in the plane of the screen. हम इसको कैसे एक सेकंड में करेंगे? Just give me a second. Square planar complex कितना होता है भाई? If I can make a square planar complex, कितना बनाना पड़ेगा? SF4 I think is square planar ना? नहीं, SF4 तो वो हो जाता है। SF4 is going to be seesaw. What is square planar? XEF4 is going to be square planar. Yeah. XE. And then I need chlorine.
HCF4 तो बन नहीं रहा है। एक सेकंड, बनना तो चाहिए। व्हाट एल्स इज गोइंग टू बी स्क्वायर यार, PTCL4 कर देते हैं ना, क्या दिक्कत। I think happening like this here. So my this thing is not working. कैसे बताएं आप लोग को हम प्लेनर? बताना तो पड़ेगा। प्लेनर देखिए, दिस इज अ प्लेन है ना, ऐसे प्लेन है सपाट बुक जैसा। हाँ ये मान लो ना, बुक के चारों कॉर्नर में आपके पास, हाँ ठीक है, गॉट इट, या भाई। इट सपोज वी हैव मेटल एटम हियर, ठीक है। एक बॉन्ड आपका इस तरह से, दिस इज लाइक 3D स्ट्रक्चर टाइप का बना रहे हैं, राइट। हियर यू हैव लिगेंड, हियर वी हैव लिगेंड, हियर वी हैव लिगेंड, हियर वी हैव लिगेंड। सो like on the metal is on the center of your notebook and on the four ends you have ligand। आ रहा सबके दिमाग में ये सुनो प्लीज, मरियम, अन्ना, सिद्दीका, Yes, हर्षा, sir. यहिया, यस सर। ठीक है। और आप ऐसे कॉपी को काटो, ठीक है। यू कट द होल कॉपी जहां पे मेटल है, तो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले दो, ये फ्रंट वाले जो दो लिगेंड है ये कटेंगे। ऑब्वियसली दीज आर गोइंग टू बी स्फेरिकल ना, ये ऐसे रहेंगे ना। वो तो हमने लिगेंड LL लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली में दीज आर गोइंग टू बी स्ट्रेट, राइट। तो पहले तो ये लाल वाले कटेंगे, लाल वाले कटे, मेक सेंस, ये सुनो समझ में आ रहा है सबको, बोलो। इफ आई एम गोइंग Yes, टू sir. कट इट, यस आई एम सर। लुकिंग फॉर अ प्लेन ना, आपने काटा तो जो ऊपर वही नीचे, अभी तो ठीक है। एंड स्लोली यू मूव फॉरवर्ड, यू विल कट दी मेटल एटम। तो मेटल का भी जो स्फीयर कटेगा, व्हेन यू आर गोइंग टू कट द मेटल स्फीयर आल्सो, देन व्हाटएवर इज अबव दैट विल बी बिलो व्हेन यू आर कटिंग इट। सिमिलरली इफ यू गो ऑन कटिंग ऑन, देन ये लास्ट के दो भी कटेंगे, जो ऊपर वही नीचे, मेक सेंस ये सब प्लीज में, बोलो। Yes, sir. यस सर। That means it is going to have a plane of symmetry. Plane of symmetry to me, okay, na? If you are going to cut it, and on either side of that cut, you are going to get the same thing. In square plane, whether it, like no matter what square planar complex you are having, it is always going to have a plane of symmetry. That is why it is not going to show any optical isomerism. Geometrical isomers के लिए क्या करना है आपको? For geometrical isomers, check ligands at 180 डिग्री। क्या मतलब इसका सर, ligands at 180 डिग्री? देख, केस वन, ठीक है, केस वन, इफ यू हैव मेटल एंड ऑल द फोर लिगेंड्स आर सेम, तो आपके पास कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, मेटल ए ए ए एंड ए। So these two A are at 180 degree and these two A are at 180 degree. सेम है, बोलो सेम है, हाँ या ना? यस सर। Yes, A के sir. अपोजिट में A के 180 डिग्री में A। So when now if you are going to exchange both of these, तो इसका तो आइसोमर बन ही नहीं सकता ना। Like no matter where you are going to put this A, कहीं भी रखो इसको, therefore it will be having zero isomer। जब बनेगा therefore it is going to have zero geometrical isomer, ठीक है, this is zero। जब केस बनेगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी केस तो नहीं बनेगा फर्स्ट टू में, केस टू।
That is just what I am doing, है ना? You are going to have a metal and there are three ligands of A and one different ligand. Three are same, one is different. ठीक है? Now metal A, B and these are going to be A and A. बाकी तो तीन A रहेंगे और एक B रहेगा. What are the ligands opposite to each other? You are going to have AA and you are going to have AB. One we मतलब एक और चीज हो सकती है that B is going to exchange places with A, लेकिन फिर भी तो वही हो जाएगा ना AA and AB. At 180 degree, what are the ligands possible in this scenario also? One A will be opposite to A and one A will be opposite to B. No matter what changes you are going to make, it is always going to be AA and AB at 180 degree. सोचिए जरा, सोचो 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 सोचो, सोचिए. Yes, जब sir. केस बनेगा तब आपको समझ में आएगा वैसे तो, ठीक है. बट इन दिस केस यू कैन सी दैट नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप मेटल को तोड़िए, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करके आप इधर कहीं भी लगा दीजिए, it's not going to change the scenario that A is always opposite to one A is always opposite to A and one A is always having B at 180 degree, that is A के opposite में B. Case 3. केस 3 में आपके पास दो सेम है, A2 B2, ठीक है. तो एक तो केस आपके पास क्या बनेगा, A के अपोजिट में A आ जाए और B के अपोजिट में B आ जाए, एक तो ये केस बन जाएगा, है ना. अनदर केस दैट कैन हैपन इज A के अपोजिट में B आ जाए और इस A के भी अपोजिट में B आ जाए. नाउ वी आर हैविंग टू डिफरेंट आइसोमर्स. मेटल A के अपोजिट में A एंड B के अपोजिट, है ना, एट 180 डिग्री यू आर गोइंग टू हैव B. तो अपोजिट मिलेगा सर, इसके भी तो ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट नहीं हुआ, ठीक है ना, मेरी लैंग्वेज में 180 डिग्री देख लो ना. दिस इज 90 डिग्री, यू आर गोइंग टू लुक एट 180. A and A are at 180, B and B are at 180 degree. Another scenario would be A and B are at 180 डिग्री और यहाँ पे भी आप चाहे ये A B लिखो, आप चाहे आप ऐसे A B लिखो, बोथ ऑफ दीज आर सेम सेम थिंग, ठीक है. A के अपोजिट में व्हाट यू आर हैविंग, यू कैन सी ना. अभी सर ऐसे लिखे तो सेम ही चीज है भाई, ये तो अलग है. इसको आप रोटेट कर दो थोड़ा, यू विल गेट द प्रीवियस कंपाउंड. बन गया A A और B B इधर आ गया, ऐसे ही तो था ना, ठीक है. A के Yes, अपोजिट में sir. B और A के अपोजिट में B. चाहे 180 वाला देखना है आपको, 90 डिग्री वाला नहीं देखना है, ठीक है. तो दीज आर टू डिफरेंट सिनेरियोस. You cannot go from here to here by rotation. You will have to break the bond. That means the atoms are arranged differently in the space. If they were arranged similarly in the space, then rotation से you would have gone from one case to another case, है ना. A B B वाले केस से आप A B वाले केस में जा सकते थे only from rotation, but you cannot do that. You will have to break the bond, है ना. Here B and B are at 180 degree, but here B and B are at 90 degree. How is this possible? How are you going to do this with only rotation? You have to break the bond, and whenever you are going to break the bond to go from one isomer to another isomer, whenever you are going to break the bond from one isomer to another isomer, वही isomerism ही है, अदरवाइज तो सेम कंपाउंड हो जाएगा ना, अदरवाइज इज गोइंग टू बी सेम कंपाउंड, ठीक है. अब अगला केस, अच्छा दैट मींस देयर विल बी टू दिया है, इसको बोलेंगे दिस इज व्हाट B इज अपोजिट टू B, यानी जो सेम वाले हैं उल्टे साइड में, तो इसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है. जब सेम वाले सेम साइड कैसे पता चलेगा, छोड़ दो, मत पता करो. अपोजिट वाले 180 डिग्री पे होने चाहिए, तो ये सिस हो जाएगा, ठीक है. तो डेफिनेशन तो सिस की क्या है, सेम ऑन सेम साइड. ट्रांस का मतलब सेम ऑन डिफरेंट साइड, राइट. लेकिन सिस में ऐसे आता है, सेम साइड कैसे सर, सेम साइड कैसे, तो ये तो सर डिफरेंट साइड, मतलब ये तो डिफरेंट डिफरेंट हो गया, ठीक है. सेम साइड का मतलब 90 डिग्री पर रहेगा, ठीक है. सेम साइड, अपोजिट साइड का मतलब 180 पर रहेगा. बट ये याद रखिए, ट्रांस में at 180 degree you are going to have same ligands. In cis at 180 you are going to have different ligands, ठीक है. 180 का बेसिस याद रखिएगा, 180, ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 90 डिग्री वाला बेसिस मत याद रखिएगा. केस 4, Ma2BC. In this A and B will be opposite to C. Another case would be A is opposite to B and A is opposite to C. Can there be any other case, बताओ, इसके अलावा बताओ और कौन सा केस हो सकता है. अरे थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोग को, मरियम मन्ना सद्दीका हर्षाइन, क्या ज्यादा हो जा रहा है क्या? नहीं सर.
आ रहा है ना, बताओ इसके अलावा। यस मरियम, टेल मी, ज्यादा हो रहा है मरियम। Sir, can you draw the मरियम, structure? ड्रॉ तो हम कर देंगे। टू टेल मी अनदर केस, इज देयर एनी अदर केस पॉसिबल? No, sir. पक्का? Yes, sir. देखिए स्ट्रक्चर तो ड्रॉ नहीं करना है ना असल में, ठीक है। तो टेम्पलेट को generate आपको समझ गया? Sir, your voice is to breaking. see, fine only, ठीक है, हो जाएगा ठीक। हर्षा आपको आ रहा है? हर्षा, Yes, sir. ठीक है। इन दिस केस ए इज अपोजिट टू बी एंड ए इज अपोजिट टू सी, ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अच्छा चलो हटाओ, ये थोड़ा सा ना आप बताओ, बोलो। केस 4, केस 5, केस बी सी एंड डी, बताइए कौन कौन सा केस बनेगा? ए कैन बी अपोजिट टू बी। Sir, your voice is cracking. Why is my voice cracking? How about now? Is it any better? Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Clear. बताइए केस बताइए। एक क्या होगा? एक अपोजिट में बोलो, एक अपोजिट में बी, और क्या बचा? D, What C is और it? D, C के opposite में D, A हाँ, and D. C and D will be at opposite. Tell me more. Another A के case. opposite में C, A के अपोजिट में C, और क्या बचा? B के opposite में D, B and C. B and D. वेरी गुड। B and C नहीं बचाना, C तो हो गया, B and D। टेल मी, और कुछ बनेगा बताओ। B के A and opposite D. में C, A and D and B and C. हाँ हाँ, वही सेम बात हो गया। A के अपोजिट में C और B के अपोजिट में, नहीं A के अपोजिट में C तो हो चुका है, A के opposite में D, sir. A के अपोजिट में D एंड B के अपोजिट में C, ठीक है। बना लेंगे कॉम्प्लेक्स, बताइए इसके अलावा और कोई केस? टेल मी, इज देयर एनी अदर केस पॉसिबल? No, sir. नहीं ना, नहीं, sir. ठीक है। तो Sir, यहाँ पे आपके पास, हाँ बताइए बताइए बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। why will A, B, and D, C be different? व्हाट? Will A, B, and D, C be different? ए बी एंड डी सी, क्या नहीं समझ में आ रहा है हमको? चलिए आप बताइए ना, ए केस में फर्स्ट कौन सा बोल रहे हैं आप? So, like in the 1 2 first 3, one, if we change इसमें the order of the elements, we can see. नहीं नहीं, अब 180 पे देखना है ना फिर आपको। अच्छा आप बोल रहे हैं कि अगर सर हम इसको बी ए और डी सी लिखें तो चेंज हो जाएगा क्या, ये पूछ रहे हैं? यू आर सेइंग वेदर दीस टू Sir, आर if we सेम और डिफरेंट, राइट? व्हाट हर्षा? change only one bond, Actually there is no changing na, if you are saying theory, you are saying whether this is going to be same or different, right? yes, हाँ, फिर दोनों बना के देख लेते yes, हैं। मेटल, ठीक है, मेटल, ए के अपोजिट में बी एंड ई के अपोजिट में डी, फाइन। हियर ए के अपोजिट में नहीं, बी के अपोजिट में ए एंड यहाँ पे सी के अपोजिट में डी, मेक सेंस? ठीक है। अब सबको हम लोग देख लेते हैं। डिस्टेंस असल में सी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ना, दैट इज रिगार्डिंग द डिस्टेंस इज चेंजिंग और नॉट चेंजिंग बिटवीन टू डिफरेंट लिगेंड्स और कांस्टेंट एटम्स। एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, whether that distance is changing or not. See, the distance between A and C in this case and A and C in this case will be same or not, because square planar है, कहते हैं स्क्वायर है, रेक्टेंगल सा दिखता है because we are humans, we cannot make it properly. तो tell me A and C के बीच में जो डिस्टेंस है वही सेम है दोनों में, हाँ या ना? yes, इज द सेम ना, है ना? सिमिलरली ए और डी के बीच में डिस्टेंस और ए और डी के बीच में डिस्टेंस, इट इज सेम और नॉट?
Same, sir. सेम। डी और बी के बीच में डिस्टेंस और डी और बी के बीच में डिस्टेंस सेम। Yes, sir. Similarly, BC and BC, same distance in both the cases. Yes, sir. Similar distance between A and B in this case, A and B in this case, both are same. Yes, sir. Similarly, DC and DC are also what? Same only. So both of these complexes are same. ठीक है, तो इतना ना करना पड़े इसीलिए शॉर्टकट लुक एट 180 डिग्री। इफ द 180 वाला जो पेयर है ना वो अगर अलग हो रहा है, इफ एनी वन ऑफ द पेयर इज डिफरेंट, देन इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। यू विल अंडरस्टैंड इफ आई मेक ऑल दी स्ट्रक्चर्स ना, फिर ये डिस्टेंस एक्चुअली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो नाम ही है ना, इस ज्योमेट्रिकल इट इज ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्री क्यों है? बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस अलग हो जाता है। इन दिस केस इफ यू सी ए एंड बी आर एट 180 डिग्री, तो AC 90 डिग्री पे ही होगा, बट इन दिस केस A and C will be at 180 डिग्री, तो डिस्टेंस अलग हो गया, एंड दैट इज व्हाई इट इज व्हाट ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्री जो आई है नाम डिस्टेंस से ही तो है। Let me just copy and paste this. ठीक है, देखिए, so A is opposite to B and यहाँ पे C is opposite to D। ठीक है, यहाँ पे A is opposite to C and B is opposite to D। Here A is opposite to D and B is opposite to C। अब इन दोनों में ही देख लीजिए ना आप, the distance between A and C is what? Small। मतलब ये अगर एज लेंथ मान ले A है and this is what? Corners, तो ये क्या हो जाएगा? A root 2। If you know the Pythagoras theorem, then the distance between A and C in the first case it is only what? A। The distance between A and C in the second case it is A root 2। A root 2 कहाँ से आया? Pythagoras theorem से आया। अगर आप स्क्वायर ले लें, माय गॉड ये मैथ आ जा रहा है बीच बीच में, ठीक है ना, देखिए नाम है A root 2, diagonal of a square। ठीक है, तो ये बस you will be having 3 geometrical isomers।